Hello, good evening everyone. Today we are going to start with the topic of power amplifier. Here I am having a small connection of how the power amplifier work, or how the cascaded network is actually done into configuration with synchronization to a power amplifier. Now, if you look carefully into the diagram, there is a mic over here. यहाँ पे समझिए अपने मोदी जी हैं, and यहाँ पे he is addressing a huge crowd in Azad Maidan, and that huge what do you say audience is somewhere sitting over here with nearby the speaker. So now this audio has to be processed from his mic to a voltage amplifier, through a series of voltage amplifier, and last and not the least through a power amplifier to finally give it to a load, a resistance, or a speaker in our case. Now since Modi ji is addressing a large number of public, this system is called as a public address system, where a small output of microphone is to be amplified. Many amplifiers are cascaded together, but for the very first few amplifiers they are always voltage amplifiers. Simply they will just increase the the amplitude of your voltage input. Now while the last one over here, which consumes a lot of power, is known as a power amplifier, because it has to deliver a huge and enormous amount of power to the load, or in our case the speaker. So let us study what these power amplifiers are actually made up of, what is the circuit diagram, so on and so forth. Now, as we can see, from the requirement of a voltage swing at the input of a power amplifier is large. Hence PAs are also known as large scale amplifiers, large signal amplifier. If you look into the power amplifier, the input requirement at the power amplifier is much greater as compared to the one which was at the voltage amplifier in the very first stage. Since the requirement at the input of a power amplifier over here is greater than that of the voltage amplifier, they are also known as large signal amplifier, or the ones which process large signals on a tremendous rate. Now many students do ask that, sir, why can't we use a simple voltage amplifier as a power amplifier? Now simply we have a circuit drawn over here. Now this circuit is nothing but a mother circuit that we always say. Now over here we have R1, R2, RC, RE bypassed, CC1 and CC2, input coupling capacitor, output coupling capacitor. Now there are two terms in the diagram, I would say. First of all, DC taken, DC power we are talking about power, bacha. DC power taken by the entire amplifier and DC power taken by the transistor. Now if you consider the entire amplifier, now the DC power taken by the amplifier is nothing but VCC into the output current of the circuit. In this circuit, the output current is given by ICQ. If I'm not wrong, we used to have ICQ as my output current. So the DC power that is taken by the amplifier, I'm emphasizing on the word taken, is given by VCC into the output current ICQ. And the DC power which is given to the transistor, first we had an amplifier, now from the amplifier we are coming to the single transistor. DC power which is given to the transistor is nothing but the voltage developed across the collector and the emitter terminals of the transistor, and the current flowing through it. So the voltage developed is VCEQ in DC analysis, and but of course with the quiescent condition, and the current ICQ. Now VCEQ can be written as we have written over here. VCEQ is written as VCC minus IC, the current flowing through the resistors RC and RE. We have taken IE and IC equal because of very minute variations in them. Now VCQ is given by VCC minus ICQ into RC plus RE. Now therefore the DC power given to the transistor, if I substitute this formula over here in VCEQ, therefore it becomes VCC, this term ICQ is multiplied inside, so it becomes VCC into ICQ minus ICQ ka square into RC plus RE. Now if you look carefully, this sign is in minus, that means it is not gainable. That means it is something which is being subtracted from my main power. In another word, the power given to my transistor minus this term. Therefore I would say that this term is nothing but the power lost. If this is the power lost which is given by ICQ square into RC plus RE, since sir IC बहुत बड़ा, RC plus RE और भी बड़ा, sir, if I take this into consideration, the power lost in RC and RE is very large. Hence because of this reason, this power voltage amplifier, which is nothing but a simple mother circuit over here, cannot be used as a power amplifier. So what can be the consideration? I want to reduce this amount. मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा multiplier factor है,
आई सी क्यू स्क्वायर इंटू आर सी प्लस आर ई, ये कैसे भी करके मिनिमाइज हो जाए ताकि जो मेरा पावर लॉस्ट हो वो ना रहे, एंड माई सर्किट शुड वर्क एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर. सो येस, लेट्स सी व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, now let us see what are the possible methods to convert my voltage amplifier to a power amplifier. Now, as can be seen from the equation above, the power lost in VA over here is mainly due to RC and RE. If these power losses can be controlled, my amplifier can be used as PA. Now, what are the possible options? अगर मैंने RC को ज़ीरो किया तो, so let's see what happens. Making RC equals to 0. If my RC is 0, ओ माई गॉड सर, व्हाट डिड यू डू सर? अगर आर सी नहीं रहा पिक्चर में तो सर आप आउटपुट कहाँ से लोगे? इन दैट केस, इफ आई एम मेकिंग आर सी इक्वल्स टू जीरो, वी कैन नॉट गेट आउटपुट फ्रॉम द एम्पलीफायर. हेंस मेकिंग आर सी इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एन ऑप्शन. सर मेकिंग आर ई, सर आर ई को ज़ीरो कर दो सर काहे टेंशन ले रहे हो? बट अगेन, मेकिंग आर ई इक्वल्स टू जीरो, माई स्टेबिलिटी इज एट स्टेक. दैट मीन्स माई स्टेबिलिटी ऑफ द amplifier will suffer, and the drift of Q point may generate distorted or clipped output signal. मैं नहीं चाहता कि मेरा जो output signal हो वो कहीं ना कहीं distorted या फिर clipped signal है. I want, if I'm giving a complete sine wave into my circuit, मैं output में भी वैसे ही expect करूँगा कि complete wave आए, चाहे वो sine है चाहे वो cosine है, but I would expect that it should give me total 360 degree value. और माई कंडक्शन एंगल, इसके बारे में बाद में बात करूँगा. नाउ सर लेट अस यूज़ द इंडक्टर इन प्लेस ऑफ आर सी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द करेक्ट डायरेक्शन टू कन्वर्ट माई वोल्टेज एम्पलीफायर टू माई पावर एम्पलीफायर by connecting an inductor. That means, sir, DC resistance in the collector circuit will be 0. दैट मीन्स सर अगर DC रेजिस्टेंस जो होता है ना सर, उसे आप व्हाट डू यू से इंडक्टर के अंदर का, सर दैट विल बिकम ज़ीरो. सर इन दैट केस सर द पावर लॉस दिस विल बी ज़ीरो. सर वो तो रहेगा. एंड फॉर AC कंडीशंस माई एक्सेल विल बी लार्ज बिकॉज यू आर कनेक्टिंग एन इंडक्टर. हेंस उसके अंदर एक रिएक्टेंस होगा. रिएक्टेंस फॉर AC विल बी लार्ज because it is given by XL is equals to 2 pi FL. My FL will be variable AC signal and we will get output voltage also. सर मज़ा आ भी गई सर अभी तो सर आउटपुट आना चाहिए ना सर. नो, इट्स नॉट दैट सिंपल. द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज वी डोंट हैव इनफ फैसिलिटी टू मैच द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर विद द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ अ लोड. नाउ बट ऑफकोर्स अगर आपने यहाँ पे RC के जगह, अगर आपने ये सर्किट डायग्राम में RC की जगह एक इंडक्टर लगा दिया, गणपति का उंदीर तो लगा दिया, पर सर आउटपुट लोगे कैसे? इंडक्टर से आउटपुट लेना कैसे रहेगा? तो सर दैट इज़ नॉट पॉसिबल डायरेक्टली. हेंस this amplifier is known as LC coupled amplifier. You have an inductor, you have a resistor, you have a capacitor. So hence it is known as LC coupled. यहाँ पे आपका जो output है it is coupled to an output capacitor CC2. Hence the name what do you say, LC coupled LC coupled amplifier. To overcome the problem in the third possibility wherein we are using the inductor in place of RC, we can connect a transformer in collector where the load RL can be connected in its secondary. सर क्या बोल रहे हो सर समझा नहीं सर डायग्राम में बताओ सर. लेट्स सी नाउ इफ यू लुक केयरफुली बच्चा ओवर हियर. नाउ बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज़ नॉट. सर यहाँ पे आपने बोला था कि सर RC की जगह L लगा दो, दैट इज़ वेल एंड गुड, मान लिया सर. पर सर यहाँ से आउटपुट निकालना सर इम्पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. इट इज़ एज गुड एज जैसे कि मेरा अमोद तिवारी चाय पीना छोड़ दे फ्री का. सर इम्पॉसिबल. बट सर वी कैन मैच द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर विद द लोड रेजिस्टेंस, दस वी कैन ऑब्टेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. सर अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम है ना सर, तो सर इसके सामने ना आपने BEE में सर पढ़ा था, वेरिन सर अगर आपने ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मर लगा दिया ना वेरिन द प्राइमरी कैन बी कनेक्टेड टू द RC. सर RC नहीं रहेगा पर RC की जगह पे रहेगा. एंड सेकेंडरी के यहाँ पे ना सर आप लोड रजिस्टर लगा दो. तो सर यहाँ पे ना आपका क्या कहते हैं ये इम्पिडेंस मैचिंग का भी काम हो गया, वेर इन माई आउटपुट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दिस साइड इज RO एंड RL लोड रेजिस्टेंस फॉर द एंटायर एम्पलीफायर इज गिवन बाय RL ओवर हियर. सर तो यहाँ पे इम्पिडेंस मैचिंग का भी काम हो गया और सर आपको आउटपुट वोल्टेज भी मिल गया. एंड सर अगर आपने N1 और N2 को सर बराबर ट्यून किया ना सर सो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम transfer of power from N1 to N2 which will be finally given to RL. So sir, this is one of the best example of converting your voltage amplifier simple था. यहाँ पे RC हुआ करता था मेरे पास. Converting your voltage amplifier to my power amplifier, the first step. Now